needs, लेकिन policing needs were fully met. To an extent that it was voted the best in Punjab repeatedly. We beat everybody else. And you could not do it without public satisfaction or delivery. It helped us get there. I repeat, we did not create any software. In 2008, they allotted 2,000 crores to develop a software. It is still not off the ground. And it is still in archaic Web 1.0 की grounding पे बैठा है वो उठ नहीं पा रहा है because it is already outdated even before it has come online. Third, जो apps हैं हम उनको यहाँ देखते हैं तो apps क्या देंगे? They give us apps which are totally dysfunctional, which means what? Apps exist, softwares exist, connectivity exists. Just how do we get them together? Why so much of background? इस पे आपको बात समझ आएगी. Look at the policing. This is what we do. We will work our way down from the left edge top to capture. Every person carrying a phone today is carrying a computer, which is a complete appliance for every policing need. By and large, 90-95% काम एक individual के phone से हो जाता है. Every phone has a camera. You've got software जो उसको बढ़ा देते हैं कि night vision कर देते हैं, zoom बढ़ा देते हैं उसका whatever. You've got small apps which enhance the functionality of your camera depending on how you want to use it. मैं let me say I'm a policeman. मैं मौके पर खड़ा हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है. The first thing I need to do is मैंने जाकर उनको रोकना है, करना है, लड़ाई ना हो. Then I have to take photos. This is what happened. This is what I saw. Capture. Certain amounts of softwares, applications are used here. After that, I need to locate कि हुआ कहाँ है. I don't need to open Chandigarh का map. I simply go to Google Maps, open Google Maps, location marker. That location will be specific up to 22 meters. जितना आप physically नहीं mark कर सकते, वो internet पे lock होगी. And once that thing is locked, the date, time, location stamp is put onto it. वो नहीं हिलने वाली वहाँ से. Then it is processed. Let's say I made a video of 12 minutes. गाड़ी आ रही थी, accident हो गई, लोग लड़े, whatever. What is the relevant part? वो एक दूसरे को माँ बहन करने मेरे को जरूरत नहीं. मेरे लिए relevant है गाड़ी लगी कैसे, किसकी गलती थी, कौन आगे था, कौन पीछे. I need to edit that 2.5 minute of video. I'll use Photoshop or whatever. जो मेरे को एक specific app उसको use करूँगा. I'll cut that part out. Dark है तो उसको highlight कर लूँगा, crop कर दूँगा, picture को enlarge कर लूँगा, whatever I want. I can do that. I'll use the third app. Transfer करना है. I've just taken an example of Gmail. I can put it as attachment to a mail, send it. I can put my entire report to it. श्रीमान so and so I'm here and here. इस समय इतने बजे accident हुआ. ये इसकी location है, ये इसकी photos है, ये whatever. I can send it to you. एप्लीकेशन के साथ उसका सारा डिटेल रिपोर्ट विद पिक्चर्स चली गई. नेक्स्ट, वहाँ पे आपका डॉक्स है, वहाँ पे वो चीज़ कोलेट होगी, इट विल बी सिफ्टेड, फाइलिंग होगी, खट की ये पड़ी इस तारीख को यहाँ से आया. सपोजिंग आई वांट टू सर्च, आई वांट टू नो एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट की फाइलें आ जाएंगी, बाय डेट सर्च हो जाएगा, बाय इंसिडेंट सर्च हो जाएगा, बाय लोकेशन, व्हाटएवर फील्ड आई वांट टू सर्च इट, वो सर्चिंग हो जाएगा. अगले आगे आई वांट टू स्टोर इट, गूगल ड्राइव. आई डोंट नीड टू पुट इट इनटू माय ओन सर्वर. डाल दिया हमने, सर्वर पे सिक्योर है, नोबडी इज गोइंग टू हैक इनटू इट. इसका एक प्रोटोकॉल है, इंटीग्रिटी. गूगल सर्च सॉर्ट आउट करनी, फेच करना है देखने के लिए उसको, मॉनिटर करना है उसको देखने के लिए. एवरीथिंग दैट अ प्रोसेस डज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो साइकिल चलता है, उस चौक पे लड़ाई, इस चौक पे झगड़ा, उस घर में चोरी, वहां एक्सीडेंट, वहां व्हाटएवर, कैन बी डन सिंपली बाय यूजिंग अ फोन व्हिच ऑलरेडी इज विद एवरी पर्सन. I do not need to set up my own towers to transmit. Service providers हैं, 2G यूज कर लो, 3G यूज कर लो, 4G यूज कर लो, इंशाल्लाह किसी 5G भी कर लेंगे. अभी तो 4G भी बड़ी मुश्किल से आता है, कहीं आता है, कभी 5G एक तो रहेगी. So anyhow, the point is, connectivity is there. We don't need to put up on towers. We don't need to buy a camera. आज मेरे को एक्सीडेंट के लिए मैं जेब से कैमरा निकालना पड़ता, मेरा फोन ही करता है. उसी फोन से फोटो लेते हो, उसी फोन से उसको एडिट करते हो, उसी से उसको ट्रांसमिट करते हो, उसी फोन पे उसको सर्च कर सकते हो, उसी पे उसके फोल्डर बना सकते हो. फोन इज जस्ट अ पॉइंट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन. बट चंडीगढ़ पुलिस has 6,672 employees. If 6,672 phones are doing the same thing, it will go to a larger server. The server need not be mine. I can go into Google. If the data requirement is such that I need to pay, I'll pay him a nominal sum of money and use the expertise and the integrity of Google. Why would I want to create an entire data service operator room or an entire server का सेटअप मैं अपना क्यों बनाऊंगा? पर्पस तो सॉल्व हो रहा है ना. Then this entire जो set of applications हैं,
ये आपकी 90% 95% ऑफ प्रैक्टिकल पुलिसिंग एप्लीकेशंस पूरी कर देती है। लेट्स से पहले पॉइंट में कैप्चर है, इफ आई गिव यू एन इंटरफेस, आपकी प्रॉब्लम है, यू वांट टू लॉन्च अ कंप्लेंट, यू डोंट नीड टू कम टू माय थाना, टेक अ पिक्चर, यू हैव अ मेल, फोटो लो, एप्लीकेशंस आप लोग भेज दो ना। आई जस्ट नीड टू गिव यू एन इंटरफेस, एक सिंपल वेब पेज देना जिनसे सारी एप्स पीछे बैकएंड में अवेलेबल हैं, उस डेटा को लाने के लिए, कोलेक्ट करने के लिए। आपको एक फ्रंट पेज देना है मैंने, जहाँ पे आपको एक फ्रंट डेस्क देना है मैंने, वर्चुअल फ्रंट डेस्क, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन डालोगे और जहाँ पे आप उसका सिस्टम चेक कर लोगे, क्या क्वेरी वहां डालोगे, जवाब भी वहां लोगे, सर्विस के ऊपर कमेंट्स डालने वो भी वहां डालोगे, फेसबुक पेज है उस पर जितने मर्जी कमेंट्स डालो। सो राइट फ्रॉम गिविंग अ कंप्लेंट टू मॉनिटरिंग योर कंप्लेंट टू गिविंग अ फीडबैक, सब कुछ वर्चुअल आप घर बैठे बैठे 5-4 कंप्लेंट ना भेज दो। सम पीपल आर वेरी हैप्पी, 25 पालन देश में सारी दुनिया पोस्ट काम लगा है, सो वेरी हैप्पी दैट, बट द पॉइंट इज यू डोंट नीड टू ट्रैवल those 70 kilometers from लहरा काका every day to my office to check पैसा नहीं बने। This can be done without creating a software. I repeat the word, that so-called word, overlapping software for policing needs के लिए हमको सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है, हमको इनकी एग्रीगेशन चाहिए, hence the word apps aggregation. Apps used in conjunction together will give you a structure which meets your needs. And believe you me, why I am saying as a policeman तो अपना example दे रहा हूँ, aggregation could be for anything. It could be for an architect's point of view, it could be from an MC point of view जो development कर रहा है, it could be from any point of view. You can use the same set of apps with minor tweaking. Hypothetically, let's say an architect है, architect goes to a spot, he can simply download a software जिसमें आप उसकी जो lines हैं आप उसको फटाफट ड्रॉ कर सकते हो, फोन पे ड्रॉ कर सकते हो, and those aggregated apps will give you a total solution. This is the concept which has been simplified. Lego blocks, you put them together, that's a Lego block car. You can put it together to make a plane, you can put it together to make a house, but if it is put together properly, it can give you a desired structure जो कि individual में नहीं है. The sum of the whole is far larger and different than the individual blocks that you see, but the potential of the blocks is you can make them into one aggregate whole. App Store provides you the Lego blocks. My concept today here is web pages थे, इनका construct जो था, इनका जो structure था usability का, वो Google ने दिया. You ask a specific thing as per requirement, sorts it out for you. App Store needs to be sorted out now. We need a software, we need a platform where this lattice framework, this is what I'm talking about, app aggregation today, is Go Lego, is like Lego bricks. You need, अच्छा bricks को ध्यान से देखें जरा, just look at all the bricks. The picture on the extreme left Lego, all the bricks would have a structure and small protrusions on one side. Those protrusions are actually meant to plug it securely in continuation to the next block. So what I'm saying now is for developers, web pages का तो कर लिया, जो web apps हैं, उसको भी हमारे को अब we have to start looking at them as Lego blocks. You've got 1.3 million apps, and one app in itself is not a solution. Apps in conjunction, in aggregation, if they are interoperable, point 2, if they can integrate together and give me intelligent adaptability. Now understand what intelligent adaptability mein kya bolta. I need a software which basically does this. I say I am a policeman. Sachin was telling me a very interesting concept. Google has already done a search issue कि अगर the search has come to a point where that if a child goes and searches for a specific thing, let's say HTML, you have HTML. If he types HTML, if a child types it, कंप्यूटर फटाफट टाइप करने वाले की ईमेल या उसका पीछे जाके वेब हिस्ट्री को सर्च करके उसको वो सर्च ऑप्शंस देता है जो कि एक बेसिक आदमी के रिक्वायर्ड है. बट इफ सचिन वाज टू टाइप इट, he would get far more advanced references because they say that an expert is asking. So what that is doing it, the computer is using its brain to provide you data that you require. It does not give you कि 0.3 seconds में आपको 2.1 million solutions दे दिए, which means nothing. उसी में लोग कहते हैं सर मर्डर हो गया, ठीक है जी, कितने हो गया, सरापा नगर हो गया, ठीक है जी, तो 2 लाख लोग रहते हैं, 2 लाख सस्पेक्ट.
बंदे है 90,000, उम्र कितनी है बच्चे 60,000। Does that give you a solution? It doesn't. 60,000 people living in a very particular locality. How does that help you? चोरी हो गई, फलानी बस्ती चोर। Can I do that? I can't. I have to zero down to 1, 2, 3, 4 people जो actual use के हैं। Similarly, what we need is we need a software, a framework which quickly sifts through the apps and gives me those apps which will work in conjunction together for a particular purpose. They will come together to give me a construct. If it is a policing construct, it gives me a policing construct. If it is a corporation development construct, it gives me that. It's a medical construct, it gives me a medical construct. Because for individual requirements and specifications apps exist करती हैं. Based on certain basic neutral apps, these form a working construct. Intelligent adaptability is something that I'd like to explain. I am using a phone, let's say Sony Xperia Z3. It has a 21.2 megapixel camera. Fantastic. 64 GB card, fantastic. Not so fantastic. India 2G, 3G. यहाँ 4G होगा इंडिया में, चौक पे 3G चलेगा, मुल्लापुर पहुंचोगे 2G हो जाएगा। ठीक है जी? That's why Punjabi what do we call everybody? BYG. Because we are aiming for BYG 22G. Only Punjabis will think of that 22, so BYG. But from 2G to 4G आपको ये नहीं पता कहाँ क्या चलेगा। The point is, your phone is one thing. आपने एक construct मांगा, applications download करनी, हर application independently काम कर रही है। No application is assessing कि जिस जमीन पे जिस structure के अंदर मैं बैठी हूँ जिस phone के अंदर, उस phone की capacity और जिसमें मैंने transmit करना है उसकी में आपस में कोई correlation है कि नहीं? Phone continuously आपको 2G दे रहा है कि ये मेरी transmission speed है। 21 मेगापिक्सल पे फोटो खींचते जा रहे हैं, आप तो एक फोटो ट्रांसमिट कर पाओगे। So what it needs to do is it needs to give that amount of intelligence to the software कि when the software package comes there, it quickly realizes, makes sense कि मैंने इसका करना क्या है। All of your modern cars are already doing this. आपकी जितनी बीमर्स वगैरह हैं, if you've driven or if you're aware, उन सब के अंदर intelligent chips हैं, depending on your speed, गाड़ी के टायर की सिचुएशन, हवा कितनी है, whatever, वो आपका फ्यूल, एवरेज स्पीड सब करती जाती है कैलकुलेट। एंड wherever they feel कि व्हीकल का नुकसान होगा, सीज कर जाती है, बंद कर देती है, या आपको बता देती है कि अब इसको ये कर लो, ये कर लो। It keeps warning you, and when you don't listen to the warning, automatically restricts your performance parameters depending on की capacity बची क्या करेगी। This is what I'm asking. You have 1.3 million apps. Give me a software which searches them and gets the relevant together for me. मुझे relevant apps मेरी requirement के हिसाब से इकट्ठी कर दें. Ask me a few questions. Like an internet, check मेरी history क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ. Give me a bouquet of applications. Aggregate them for me कि these are the apps which should come together to form a construct for their purpose. Then automatically that app should do a study कि मैं किस environment में perform कर रहा हूँ. Whether I am in a 5,000 rupees का phone or a 55,000 का phone, मेरी बैकअप इतनी है, मेरी बैकअप इतनी है, मैं इतनी की फोटो लूँगा. Before it does take a 21 megapixel picture, it must ask you or tell you कि अगर आप ये खींचोगे तो इसका आप कुछ कर नहीं पाओगे जिस चीज के लिए आप मांग रहे हैं. Things like that. That is intelligent adaptability. Intelligent selection, intelligent integration and intelligent operation is what we are looking for. This is what I've already spoken about, 1.3 million apps and serendipitous future. If we are able to come to a situation कि हम जो चीज हमारे पास existing है उसको इकट्ठा कर सकें in such a way that it makes a meaningful whole construct, automatically good things will start happening. यार अब्दुल्ले गाना साने सुने? शहरी मानता है यार सुने? सुना सर? Yes. How do you think it became a super hit? YouTube was actually never meant to be a base for new singers or whatever. It was actually meant कि अपनी यादें डाल दो, छोटी मोटी डाल दो. But what has YouTube become now? सब उसमें अपनी चैनल बनाते हैं, उसमें डाल कर. It has become a low cost career, low cost promotion avenue. शहरी मान का perfect example है. A man
with a very simple, Sherry happens to be a person friend, so I know him, but from a very simple, a song which was close to it, but did not have too many expectations of doing commercially very well, was uploaded. And because of serendipitous outcomes, it became a super hit. The consequences were that Sherryman became a hit singer, he performs, he charges a phenomenal amount of money to do shows, and his career got established as a singer. The future is serendipitous because background बहुत कुछ हो गई है. Billions and billions, trillions of web pages, millions and millions of apps. We just need a platform which gets them together in a meaningful way, and good things will happen because they are new. Thank you so very much. This was Vinayak, please can you clap again for that amazing insight plan we have something over here. Okay, moving ahead, there are a lot of people who are actually tweeting and using hashtags on Facebook, and it's really amazing.